बायोटेक्नोलॉजी इन द 21st सेंचुरी, इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी प्रोग्रेस कैसे कर रही है और अगले आने वाले चंद सालों में व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स शुड वी एक्सपेक्ट फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी। इस वक्त आप लोग अपनी स्लाइड्स के ऊपर देख रहे हैं कि दो सेल्स हैं, बट व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट दीज सेल्स? क्रेग वेंटर, जिसने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट के कंसोर्शियम को बीट किया था, ही अल्टीमेटली केम अप विद दीज सेल्स एंड वी कॉल देम द अल्टीमेट रीबूट। व्हाई? आप लोगों का कोई भी आप एक प्लांट सेल ले लें, उसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि आप उसको डी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यानी आपने प्लांट का एक सेल लिया, अल्टीमेटली आप उसको डी डिफरेंशिएट करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन एनिमल्स के अंदर ये एबिलिटी नहीं है। मसलन आपके पास एक नर्व सेल है तो वो अल्टीमेटली नर्व सेल ही बनाएगा। अगर आपके पास कोई रेटिनल सेल है जो आपके आइस के अंदर होते हैं तो वो अल्टीमेटली रेटिनल सेल बनाएगा, स्किन सेल्स को बनाएगा। लेकिन अल्टीमेटली जो आपकी बॉडी में स्टेम सेल्स हैं, नाउ वी आर गेटिंग दैट एबिलिटी कि हम उनको डी डिफरेंशिएट करके किसी और पाथ पर ले जाएं। मसलन हम मसल सेल से अल्टीमेटली एक नर्व सेल बना लें। दीज टू सेल्स आर टोटली सिंथेटिक। आप इसमें अपनी मर्जी से डीएनए डालें और अल्टीमेटली सेल टाइप डिटरमिन करें। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग देम अल्टीमेट रीबूट। नाउ किस किस्म की प्रोडक्ट्स आ रही हैं इस किस्म की टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए? ग्रोइंग टीथ। आज से कुछ अर्सा पहले तक इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी कि अल्टीमेटली हम आपके अपने ही सेल से कोई इस किस्म का काम कर सकें। नाउ दिस इज वर्क ऑफ प्रोफेसर पॉल शार्प एट किंग्स कॉलेज लंदन, एंड व्हाट ही इज डूइंग इज that he is taking your own gum cells and ultimately differentiating them into your own teeth. Why do we need your teeth? आप जितने भी implants देख लें, ultimately they cannot mimic your natural root structure. आपका जो टीथ की रूट होती है वो अल्टीमेटली मर जाती है, लॉस ऑफ जॉ बोन होता है, और अराउंड द इम्प्लांट अल्टीमेटली डेथ होती है। और अल्टीमेटली ये जो फ्रिक्शन होती है, जो आप लोगों की फ्रिक्शन है टीथ के इर्द गिर्द, जो आपने नकली टीथ लगाया होता है, अल्टीमेटली वो आपको ट्रबल कॉज करती है और अल्टीमेटली आहिस्ता आहिस्ता आप लोग यानी कि टोटल नकली डेंचर्स की तरफ जाते हैं। सो इन दिस वे you have a technology which can replace your teeth biologically. So this is very interesting. Similar to this, let me give you another example. Claudia's trachea. Claudia Costello, she was in her 30s when she got infected by TB. And what happened was that led to the collapse of the tracheal branch of her windpipe. So basically जिसको आप शहरक कहते हैं, अल्टीमेटली वो कोलैप्स कर गई जो उसकी लेफ्ट लंग को जा रही थी, and she could barely breathe and there was no other option but to find her a new trachea. मगर क्या आप किसी और इंसान का ट्रैकिया लेकर लगा सकते हैं? Probably not. Why? क्योंकि आपकी बॉडी किसी और इंसान का ट्रैकिया रिजेक्ट कर देगी. It has to come from your own body, otherwise there will be an immune rejection. Now what to do about it? What Spanish doctors did was amazing. They took a piece of trachea, 7 centimeter piece of trachea from a deceased donor, and they got rid of the donor cells. Ultimately, it was just a bare cartilage. And then they coaxed basically जो bone marrow cells थे, which they took from Claudia, and they transformed them into cartilage cells. Ultimately, a trachea was formed. It was shipped over to where this lady was being operated, and ultimately it was a successful operation. Now, आज से कुछ अर्सा पहले तक these things were not possible. That is the new direction biotechnology is going. Ultimately, these products are coming into the day-to-day routine of our hospitals. Let me give you another example. This is from Professor Anthony Atala's lab at Wake Forest. What you see in the top image is urinary bladder. How good it is that you can have a urinary bladder made out of your own cells in a very similar fashion, that you basically take a scaffold, you spray some stem cells on it,
and ultimately those cells form these layers, which you can ultimately get rid of the scaffold and ultimately implant them in the patients. इट इज़ मच बेटर कि आप लोगों ने काफ़ी सारे बूढ़े लोगों को देखा होगा कि दे हैव 3 or 4 bags hanging out of their tummies, and that's how they are surviving, especially at the older age. What you see underneath is a sort of scaffold to grow ear. तो अगर किसी का कान कट गया हो, for example, soldiers can be in this position or some other people, then you can grow new ears for them. These sort of things were unheard of. We are coming at a stage जहां पर we can ultimately start printing kidneys as well. There would be we'll discuss it in detail later, that how we can print organs in a separate lecture. Now, growing blood vessels. Why do we need to grow blood vessels? आपको इंजरी हो सकती है, and sometimes patients can be born without a major blood vessel. I came to know that my 3-year-old nephew, we just found out that he doesn't have inferior vena cava. For these patients, now there is a good news that we can take their stem cells and ultimately differentiate them into blood vessels. So there is a lot of promise in all these technologies. And the good thing is that it's not only about promise, it's about that these products have started to yield some results. But sometimes some things go too far. There is this example from Professor Clifford Tabin, and what he is doing at Harvard Medical School is differentiating wings of chicken, ultimately so that they differentiate into another leg. So, how about you can have a chicken with 4 legs? बेसिकली जो चिकन के जो विंग्स हैं उनका कोई एज सच फंक्शन नहीं है उसकी डे टू डे एक्टिविटी में. It's like sort of playing God, but ultimately there is a scientific point to it, that you can differentiate such animals at this large scale to turn into something very different. This was one extreme example I wanted to show you कि ultimately आपके पास बायोटेक्नोलॉजी की पावर कितनी ज्यादा है. Growing meat. Many of you must have gone to foreign countries where you are always trying to find a halal shop or similar. But now, can you imagine that we can grow meat in the laboratory? I'm not sure whether it will be halal or not, but the thing is कि जो vegans हैं, जिस तरह वो गोश्त बिल्कुल नहीं खाते, they don't want to see animals slaughter हो रहे हो. But what you have here is कि ultimately you can grow meat in the laboratory. Pretty much we are growing vegetables in our gardens. So that is something amazing, and it is something which is actually that we don't have to take lives of animals.